Okay, good evening. So we'll start with anticholinergics. Okay, so anti-muscarinic drugs, anticholinergic, yeah, parasympathetic, uh, uh, parasympathetic against the parasympathetic system. The drugs which are used are classified into natural and synthetic. Now, in the synthetic there are many, but in the natural there are atropine and hyoscine. The most important question here, like has been asked in Viva, is like name the two drugs which are derived from plant sources and name them. So atropine will be derived from Atropa belladonna, okay, and also there is datura, and hyoscine is from the Hyoscanus niger. Hyoscanus niger. This hyoscine is also known as scopolamine, or it's used in the motion sickness, okay, and atropine is used at many places. Now these are anticholinergics. Let's discuss more about anticholinergics. Now suppose this atropine will say this is an anticholinergics. Now basically you have to understand, it is very common to understand, like first generation antihistaminic, then antipsychotics, tricyclic antidepressants, they all have anticholinergic property. So what would happen, the clinical features are like similar. They decrease the body secretion, so there will be a decrease in the sweating, so it will cause hyperthermia, causing fever, right? Flushing will be there, dry eyes, dry mouth. Okay, the dry mouth is present most commonly in adult. Patient क्या बोलेगा, मुंह सूख रहा है साहब, ठीक है, and in the children there will be fever or hyperthermia, ठीक है. Mydriasis, there will be cycloplegia also, urinary retention will be there, constipation, and in CNS there will be hallucination and delirium. That is the acute confusional state, okay, that is the delirium. Now the treatment here of atropine poisoning is physostigmine. Why physostigmine? Why not neostigmine? Because physostigmine can cross blood-brain barrier, whereas neostigmine, being a quaternary amine, cannot cross the blood-brain barrier. The physostigmine is a tertiary amine, it can cross blood-brain barrier, so used in the atropine poisoning. Now atropine and hyoscine can block all the receptors. These are tertiary amine, lipid soluble, so enters the brain, and it is used in the topical eye drops because of the lipid solubility. Okay, what are the effect on the CNS? So atropine decreases the memory and decreases the cognition. But you'll see that hyoscine decreases cognition as well as causing sedation. So used in the motion sickness, it will cause also sedation. So it helps the patient to sleep during the journey as well as decrease the cognition, and the patient is the vomiting center has been depressed a bit, right now, so hence the use in the motion sickness, right? Now hyoscine is also used as a truth serum in the narco analysis. The drug of choice is thiopentone, but yes, hyoscine is also used there. Other uses of hyoscine are twilight sleep and motion sickness, as we have discussed. Okay, now it is very important that this trivestibular apparatus is present in the ear, right? Here H1 and M1 receptors are present. Now vestibular nerve will take the response, take the action potential, right, and it will go to the CTZ area and then to the cerebellum. This is the route. Okay, so we have to understand this antihistaminic, many antihistaminics are used along with this, and M1 receptor blockers, scopolamine, has been used. Treatment: first generation antihistaminics like diphenhydramine, sinaragine, and cyclizine. These are the three drugs which are approved for motion sickness. These are the first generation. Okay, so sinaragine is also causing blockage of calcium channel on the vestibular nerve. Okay, so it is used it's very important. Okay, now hyoscine and diphenhydramine, they are used as a post-auricular patch, causing increase in the absorption. So hyoscine is the antimuscarinic one, and antihistaminics we have diphenhydramine, sinaragine, and cyclizine. Sinaragine is used as a transdermal patch, whereas diphenhydramine and hyoscine is used as a
post-auricular patch. The route is oral or post-auricular patch, as we discussed. The important thing is that in motion sickness, first it is used, like it is given 30 minutes before the journey begins. 30 minutes before the journey begins. This is a potent viva question. Side effects. This is used. We know that this is sedative, right? So if there is more sedation is there, so ephedrine is given as a treatment. Okay, symptomatic treatment we give. And ondansetron is 5-HT3 antagonist, and as we have discussed, like they have only H1 and M1 receptor in the vestibular apparatus. There is no role of 5-HT3 receptor, so it is not effective in motion sickness. It is not effective in motion sickness. So this is all about CNS. In the heart, it has M2 receptor. Heart has M2 receptor where acetylcholine acts, right? Atropine, what it does, it is very important. It is drug of choice for bradycardia and AV node. It is a drug of choice for bradycardia and AV node. Okay, it is very, very important. Okay, but yes, there is a exception. It is exception because in the transplanted heart, the M3 receptors which are present in the bronchus may cause bronchoconstriction and increase in the mucus secretion. So we avoid in the transplanted heart. Otherwise, we give atropine in bradycardia and AV node, right? AV nodal blockage. In the respiratory system, we give oral and IV. Atropine can be given. Also, glycopyrolide is a very common drug which is used with the respiratory system. It is used by the anesthetist to dry the airway. Okay, glycopyrolide is a quaternary amine. Whereas atropine and hyoscine are tertiary amines. Glycopyrolide do not interfere with the brain during the surgery, but atropine does impact the brain, right? So these are used in the pre-anesthetic medication. These are the drug of choice for the pre-anesthetic medication before the intubation. Glycopyrolide is the drug of choice. Route is the inhalational route. It is a treatment of choice given in COPD as well as in asthma. Okay. Now it is very important that you should know that in the like ipratropium, tiotropium, acidinium, umeclinidium, these are the longest and most M3 specific blockers. Okay, we have to understand this. Very important question. Which are the anti-muscarinics, which are the anticholinergics, which are used in the asthma and the COPD. These are the drugs. Okay, the side effects are, this causes urinary retention. It decreases the mucus production. Now the most important and to be discussed in practicals as well as in viva are the anti-musculinity effect in the eye. So what happens? Basically, we have these muscles, right? So we have radial muscle and circular muscle. In the radial muscle, alpha 1 receptor is present. In the radial muscle, M3 receptor is present. Okay. So alpha 1 का काम क्या होगा? ये sympathetic है ना? और M3 क्या होगा? Parasympathetic है. अल्फा 1 का स्टिमुलेशन होगा तो सिंपैथेटिक सिस्टम में आई का क्या होता है? डायलेटेशन. तो अगर कोई स्टिमुलस अल्फा 1 को एक्टिवेट करता है तो दैट विल कॉज मिड्रियासिस. और कोई रिसेप्टर अगर पैरासिम्पैथेटिक है और वहाँ पे अगर एक्टिवेट हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तो M3 एक्टिवेट होगा तो दैट विल कॉज मियोसिस. ठीक है. जब एक्टिवली अगर अल्फा 1 और M3 को किया जा रहा है तो इसको एक्टिव मिड्रियासिस और एक्टिव मियोसिस बोलेंगे. लेकिन अगर मान लीजिए कि M3 का एंटागोनिस्ट को हम यूज़ करते हैं, तो M3 क्या करेगा? काम नहीं करेगा. अगर M3 काम नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा 1 ज़्यादा काम करने लगेगा. तो क्या हो जाएगा? अल्फा 1 ज़्यादा काम करेगा तो मिड्रियासिस. तो इस मिड्रियासिस को हम लोग बोलेंगे पैसिव मिड्रियासिस. तो M3 ब्लॉकेज से क्या आएगा? पैसिव मिड्रियासिस. ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एक्टिव मिड्रियासिस एंड पैसिव मिड्रियासिस एंड मियोसिस. ओके, नाउ these are basically the lens, the ciliary muscles, okay, where the M3 is present, and this is also for the accommodation. This is the cornea,
Yes, and M3 is also for the meiosis. Alpha 1A is for the mydriasis. So active and passive we have discussed. Now in the anti-muscarinic drugs we have mydriatic and plus cycloplegic age action. Cycloplegia means paralysis of the ciliary muscles. Okay, so there will be ciliary spasm, and in it is given in the anterior uveitis. Okay, also refractory error testing में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं. Refractive error testing, right? Now the drugs which are used are atropine. Now atropine टॉपिकल आई ड्रॉप्स के रूप में atropine दिया जाता है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट 14 डेज तक वो आँख डायलिटेशन ही रहेगा. ठीक है, बस कैसे डायलिटेशन रहेगा? देखो एट्रोपिन M3 क्या है? एंटागोनिस्ट है. इसका काम क्या रहेगा? ये काम क्या करेगा? पैसिव मिड्रियासिस करेगा. एट्रोपिन को कहाँ यूज़ करते हैं? एट्रोपिन को हम लोग चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं. कहाँ चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं? क्योंकि एट्रोपिन को चिल्ड्रन में क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज एट्रोपिन क्या करेगा, जो चिल्ड्रन के जो मसल्स होते हैं, वो बहुत स्टिफ होते हैं, टाइट होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे डायलिटेशन के लिए एट्रोपिन को यूज़ किया जाता है. ठीक है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव टेस्टिंग से बेटर अगर टर्म यूज़ किया जाए दैट इज़ द फंडोस्कोपी. क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ था कि बच्चों में देते थे पहले, बट अभी एक्चुअली एज एन ऑइंटमेंट हम लोग यूज़ नहीं, एज अ रिफ्रैक्टिव टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ यूज फॉर फंडोस्कोपी इन चिल्ड्रन. बच्चों में इसीलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ द सेम कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ द टाइटनेस ऑफ द मसल. ठीक है, तो एडल्ट में क्या यूज़ करते हैं? ट्रोपिकामाइड रिफ्रैक्टिव टेस्टिंग के लिए. ठीक है, फिर होमाट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड. तो ट्रोपिकामाइड इसमें रिफ्रैक्टिव टेस्टिंग में यूज़ करते हैं. ठीक है, इन एडल्ट्स और यहाँ पे चिल्ड्रन में बेसिकली यूज़ करते हैं, बट फॉर द फंडोस्कोपी. ठीक है, और एंटीरियर यूवेटाइटिस के लिए. शॉर्टेस्ट मिड्रियाटिक कौन है? फिनाइलेफ्रिन अल्फा 1 एगोनिस्ट. शॉर्टेस्ट साइक्लोप्लेजिक प्लस मिड्रियाटिक कौन है? ट्रोपिकामाइड. इसलिए एडल्ट में यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द ओनली यूज ऑफ फिनाइलेफ्रिन? दैट इज़ द फंडोस्कोपी उसका यूज़ है, और कुछ यूज़ नहीं होता. ऑल मिड्रियाटिक्स लाइक आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लाउकोमा बिकॉज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज द मियोटिक्स. क्लियर हो गया? तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट आई, एंड ये आपको समझना होगा. ठीक है, ब्लैडर का क्या कंसेप्ट है? ब्लैडर में क्या है कि ब्लैडर में भी M3 पाया जाता है और बीटा 2 पाया जाता है. तो पारासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा? M3 को एक्टिवेट करेगा, वहाँ से ब्लैडर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वहाँ से यूरिनेशन होगा. ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा है, नहीं, तो आप टॉयलेट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका बीटा 2 काम करेगा. वहाँ पे ये डेक्टूजर मसल रिलैक्स हो जाएगा, और डेक्टूजर मसल रिलैक्स होने के कारण यूरिनेशन नहीं होगा, आपको पेशाब नहीं लगेगा. ठीक है, और अगर आप रिलैक्स है, एकदम चिल मार के, एकदम टेंशन फ्री, लाइक हनीमून फेस टाइप का, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करेगा. वहाँ पे क्या होगा? M3 रिसेप्टर काम करेगा. देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेक्टूजर मसल, और वहाँ से यूरिनेशन होने का चांस है, राइट? होगा. नाउ very very important, alpha 1A is present in the internal urethric sphincter. Alpha 1A is present in the internal urethric sphincter. ANS का एक पार्ट जो कंट्रोल में रखता है, दैट इज द अल्फा 1A, जो कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है. ठीक है, और ये अगर काम नहीं कर पाया सही से इन स्फिंक्टर, तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होना स्टार्ट हो जाएगा. ये सब के बारे में पढ़ा जाएगा बाद में. Anti-muscarinic में so like we are saying this are bladder relaxing agents. These are vesico-selective agents. ठीक है, तो urinary incontinence का ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, तो there will be this is known as like overactive bladder और detrusor instability में हम लोग उसको यूज़ करते हैं. किसको? Anti-muscarinic agents को. क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज M3 का काम क्या था? यूरिनेशन करवाना. तो M3 एंटागोनिस्ट देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपका यूरिनेशन से रोक देगा. ठीक है, व्हाट आर द ड्रग्स आर द ऑक्सीब्यूटाइनिन. दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लेवोक्सेट, फेसोटेरोडीन, टॉलटेरोडीन, ट्रॉस्पियम,
solefenacin, darafenacin. Solefenacin, darafenacin. So these are the most vasoselective agent, solefenacin and darafenacin. This is the M3 antagonist which are used in the bladder, the urinary incontinence, overactive bladder. This actively the detrusor बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, एक तरह से बोलो ड्रिबल हो रहा है यूरिन, ठीक है. Now all atropine like drugs are contraindicated in the benign prostate hyperplasia, ठीक है. ये जो स्टेटमेंट है बस याद रखो, राइट. नाउ बीटा 3 एगोनिस्ट वहाँ पे क्या है, मीरा बैकग्राउंड. तो इट्स ऑल्सो इज अ डेट्रूजर रिलैक्सेशन करता है. तो वो कहाँ पे, ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज़ करते हैं. मीरा बैकग्राउंड, अ न्यू ड्रग, मीरा बैकग्राउंड, ठीक है, याद रखिएगा. बीटा 3 एगोनिस्ट का है बात किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो बीटा 2 यहाँ पे है, बीटा 3, और यहाँ पे हमको रिलैक्स करना था, एगोनिस्ट देना है, ठीक है. तो बीटा 2 बीटा 3 एगोनिस्ट, मीरा बैकग्राउंड. जीआईटी में क्या है, M1 है, M3 है. M1 का काम क्या है, HCl रिलीज़ कराना. M3 का काम क्या है, ACTH मतलब सॉरी एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करना. तो वहाँ से क्या होता है, वो काम करेगा एब्डोमिनल स्पाज्म में. ज़्यादा अगर मान लो हो रहा है, एब्डोमिनल कॉलिक की पेन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका, हम लोग एज एन एंटी स्पाज्मोटिक के रूप में यूज़ किया जाता है M3 एंटागोनिस्ट. जैसे आपका डाइसाइक्लोमीन हो गया, मोस्ट कॉमन ड्रग डाइसाइक्लोमीन, ठीक है. इट इज़ यूज इन द एज एन एंटी एस्मोटिक स्पाज्मोटिक, जैसे द एब्डोमिनल कॉलिक की पेन में यूज़ करते हैं. इट इज़ द स्क्वीजी पेन ड्यू टू प्री ऑब्स्ट्रक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है. उसी तरह से M1 में HCl रिलीज होता था, तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी मस्करनिक M1 ब्लॉकर्स देंगे, पिरेंजिपिन, टेलेंजिपिन. वो क्या करेगा, पेप्टिक अल्सर में यूज़ करेंगे, जिससे HCl का सिक्रीशन कम हो जाएगा. व्हाट आर द अदर ड्रग्स, these are propantheline, isopropanide, glycopyrolate, pipenzolate, oxyphenadium, clinidium, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट नेम्स आर इम्पॉर्टेंट. In the undergraduate examination, the classifications are important, but in the postgraduate, there is no importance of the classification, right? Now, emergency, there is a new drug you always have when you'll go to the emergency in the internship. Now, there you'll see this injection drotavarin. Now, this drotavarin is PDE, phosphodiesterase E4 inhibitor. It will increase the cyclic GMP and causes the muscle relaxation. So this drotin is the drug of choice for abdominal colic and renal or ureteric colic. कहीं पे तुम्हारा स्टोन है, पेन हो रहा है, सीवियर पेन है, हम लोग क्या करेंगे, स्टोन में ड्रग ऑफ चॉइस इंजेक्शन ड्रोटावेरिन, दैट इज द PDE4 इनिबिटर, ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे, ड्रोटावेरिन प्लस वैलेथामेट, दीज आर ड्रग्स विच आर एंटी मस्करनिक एज वेल एज PDE4 ब्लॉकर्स. दिस हेल्प्स इन द सर्वाइकल राइपनिंग में हम उसको यूज़ करते हैं, जबकि ड्रग ऑफ चॉइस वहाँ पे डाइनोप्रोस्टोन है, बट स्टिल ड्रोटावेरिन एंड वैलेथामेट आर यूज्ड इन द ड्यूरिंग द सर्वाइकल राइपनिंग करा होता है, ठीक है. नाउ मिसलेनियस पॉइंट्स में क्या आ जाएगा कि एट्रोपिन और डाइफेनॉक्सिलेट जो होता है आपका ओपियोइड, जो एक्चुअली है डाइफेन ऑक्सीडेट. तो एट्रोपिन के साथ कम्बिनेशन के साथ हम लोग क्या करते हैं, इट रिड्यूसेस द एडिक्शन पोटेंशियल,